Okay, so good morning to everyone, and we will we will we will start with a quick recap of what we have already done. So we have been introduced to a mathematical operator of d by dx, and this mathematical operator d by dx it acts on a function, and the function is placed to the right of the operator, and when the operator acts on this function following certain rules, you end up with an answer. Now, a few things I would like to clear before we move. This variable x, right? I have used x because it is the most common variable to be used. It can be anything, right? So, in the questions that we had, in the questions that you had done, lecture 2, I hope everybody could do. So the questions that you had done, there was a question where I had given some other variables, right? I mean, I can name them whatever I want, right? So let's say that I give you z is equal to some function of z is equal to some function of theta, right? I think there was a question like this. And I asked you to find a slope. Remembering that slope at the end of the day is nothing but the slope of the graph, which is drawn between two variables, one being the dependent variable, one being the independent variable. So if z is equal to f theta is our given relation, then theta must be the independent variable and z must be the dependent variable, right? And there may be a graph between z and theta. So if I'm interested in finding the slope of this graph, what I will do is that I will apply the operator d by d theta on both sides, right? I will apply d by d theta on both sides to find the slope. And remember that the slope is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. So in this case, the slope will be given by z2 minus z1 upon theta2 minus theta1, right? Which would be equal to delta z upon delta theta, right? Which would be equal to dz by d theta, and dz by d theta would be d by d theta
of this function of theta, right, which you would follow the same rules to obtain whatever answer is whatever answer is going to be. What I'm trying to say here is that any variable can be used, right? It is not only x. The operator is not really d by dx. It is d by d of some variable. I always end up using x because it is the most common assumed variable, right? From class 5th, 6th, from wherever you started algebra, we always started with the variable x. Therefore, I end up using the variable x. You can use the variable theta, you can use the variable y, you can use the variable z, you can use whatever you want. But the relationship will always be that you will have something on the y-axis and you will have something on the x-axis, right? So whatever is there, whatever variable is there on the vertical axis, right, will be forming the numerator part of this and whatever variable is on the x-axis will be forming the denominator of this, right? So y2 minus y1 upon x2 minus x1 should really read the difference in the coordinates of the vertical axis divided by difference in the coordinates of the horizontal axis. Okay, so vertical horizontal axis में कुछ भी ले सकते हैं. कई लोगों ने उस थीटा वाले क्वेश्चन में d by dx ले लिया था, which is wrong. You have to take d by d theta. Okay? Right. So I will move ahead. अच्छा हाँ, साइन स्क्वायर थीटा आई होप, अच्छा आई थिंक कुछ लोग नहीं कर पाए थे ना. सो y is equal to sine square theta. Find slope, or I might write find dy by d theta, right? So y is equal to sine square theta, and on both sides now I will operate d by d theta. Remember that d by d theta in this case, or d by dx in another case, or d by dz in another case, is simply an operator just like root. Okay? So you can operate it on both sides of the equation, just like taking root on both sides, right? Huh. Yeah. So on the left hand side, I will end up with dy by d theta, right, which is nothing but the slope, right? It is y2 minus y1 upon theta 2 minus theta 1. Now on the right hand side, I end up with d by d theta of sine square theta, and when I look in my table, I find that there is no term for sine square theta. Yeah, remember we had I had told you that there is a table of results in your booklet, right? We had discussed a table of results yesterday. If you look at the table of results, then sine square theta का उसमें कोई आंसर नहीं है. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोसाइन थीटा होता है, ये मालूम है. साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a कोसाइन ax प्लस b होता है, ये मालूम है. अगर थीटा के टर्म्स में दिया होगा
तो साइन ए थीटा प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए कोसाइन थीटा ए प्लस बी होएगा, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है। बिकॉज साइन स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है, what we need to do is we need to convert sine square theta into something else, and the way to do that is to remember that we had an identity with us that cosine of a plus b is equal to cosine a cosine b minus sine a sine b. Now, if I put a is equal to b is equal to x, then I'm going to get cosine 2x is equal to cosine square x minus sine square x. Okay? And remember that I want to replace sine square x because it does not exist on my table, right? So I get cosine 2x is equal to 1 minus sine square x minus sine square x, and this gives me that cosine 2x is equal to 1 minus 2 sine square x, and therefore sine square x is equal to 1 minus cosine 2x whole divided by 2, right? So what I have done is that I have converted sine square x into, by using trigonometric identities, into an expression which has cosine 2x, right? And if I look in my standard table of results, I find that there is a term cosine ax plus b. It is there only, right? Okay. So I go back and I say that, look here, I can write sine square theta as 1 minus cosine 2 theta whole divided by 2. Okay. So now I can write dy by d theta as d by d theta of half minus half d by d theta of cosine 2 theta. Right? Please notice what have I done. I have used rules number 1 and 2. So rule number 1 was that if you have d by dx of fx plus gx, that means you are to apply the operator d by d something on f something plus g of something, then you can always split it up. You can write it, you are allowed to write it as d by dx of fx plus d by dx of gx. So here I have said that this 1 minus cosine 2 theta over 2 is equal to 1 over 2 minus cosine 2 theta over 2, and I have separated. And then for the second term, product rule भी use कर सकते हैं, बिल्कुल, yeah. For the second term, what I have done is that I have used rule number 2, and rule number 2 tells us that if you are finding d by dx of k into some function of x, then this k does not really take part in the process of differentiation, and you can actually take it out as a multiplier. So I have taken this half out from cosine 2 theta by 2. So 1 by 2 I have taken out, right? Product rule पढ़ाने तो दो, फिर मैं बता रहा हूँ ना. There is an easier way to do this. I'll just show you, but first I want you to भैया chain rule भी चलेगा. Yes. So now I apply dy by d theta on the left hand side is equal to d by d theta of half, but half is just a number,
Remember, and d by d theta or d by dx or d by dy of any constant, any number. Somebody I think asked me yesterday कि pi का differentiation क्या होगा? Pi is a number, real number, तो उसका differentiation 0 है. Minus half into cosine 2 theta, right? Cosine 2 theta का क्या होएगा आंसर? Cosine ax plus b d by dx of cosine ax plus b is minus a sine ax plus b. So in this case, d by d theta of cosine 2 theta will be minus 2 sine 2 theta. Right? You put a is equal to 2 and b is equal to 0. And then finally we get our answer that dy by d theta will be equal to sine of 2 theta. Right, now I will tell you, and as a couple of people have already messaged, there are two other ways of doing this, right? And if you have read lecture 3, then you would have figured out, hopefully, the two other ways of doing this, right? So I want to show you d by dx of any number is 0. Slope of constant is 0. D by dx, d by d theta of any constant, any number, half, 1, 2, 3, pi is 0. So I want to show you now rule of operation number 3, which is called the product rule. Okay, and the product rule tells us that if I have, remember I'm using x again, but यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. So d by dx of fx multiplied by gx is equal to, now see what is happening. If you have two functions which are multiplied to each other, right, then the product rule tells us that differentiate the first function, leave the second function alone, plus leave the first function alone and differentiate the second function. Right? So this is called the product rule, and we are going to use this extensively. Okay. So I'll give you an example. Find dy by dx, find dy by dx if y is equal to sine square x. Right? So what do I do? D by dx on the left hand side, d by dx on the right hand side. Right? And here we have y. Here we have sine square x. Okay? हाँ, बिल्कुल सही. So dy by dx on the left hand side will be equal to d by dx of sine x
into sin x. Right? This is the product rule, right? So for the application of the product rule, we must have two functions multiplied to each other. And what better example than a square, which is the object multiplied to itself. So let me apply the product rule. This will be equal to d by dx of sin x into sin x plus sin x into d by dx of sin x. So what is d by dx of sin x, right? You have found this out. You have found this out the hard way. Hopefully everybody remembers now. So this would be equal to cosine x sin x plus sin x cosine x, which is equal to 2 cosine x sin x. Right? Now you may ask, so this is the answer, right? This is the answer. Now you may ask, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब हमने यहां पे आंसर निकाला था तो हमारे पास आया था sin 2 थीटा. ओके, यहां पे आया था sin 2 थीटा और यहां पे आ रहा है 2 cosine x sin x. So again I will like to draw your attention to the identity of sin a plus b, which is equal to sin a cosine b plus sin b cosine a. And if I were to put a is equal to b is equal to x, then I would get sin 2x is equal to sin x cosine x, sin x cosine x, 2 sin x cosine x. Right? So these are called, I think these are called double angle formulas or something like that. ये बिल्कुल ही याद रखना है, okay? और ये बिल्कुल ही याद रखना है, कोसाइन का डबल एंगल फॉर्मूला है और अभी जो मैंने लिखा ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है. Using this, you can always write this as sin 2x. Right? So now e raised to power x अभी आते हैं उस पे. Don't worry about e raised to power x अभी. Don't worry about it. ln x जहां जहां दिखाई दिया और e raised to the power x जहां जहां दिखाई दिया, you don't really have to worry about it अभी नहीं. Okay, so I will now give you example. You have to do it and tell me the answer. केवल 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. फाइंड, एक मिनट, हाँ भाई. सर मेरा डाउट था कि अगर हम लोग इसको छोड़ दे 2 cos x sin x से तो फिर मतलब गलत है क्या कि हम लोग को चेंज करना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ओके सर. Because you have carried out the process of differentiation ना. जो आंसर आया है बिल्कुल सही. You don't need to do anything. ओके सर, थैंक यू. हाँ, तो I am giving an example. Please solve this. The handwriting हटाओ. So the example is
find dy by dx if a y is equal to root sine 2x and b y is equal to x cube sine x into root x plus 1. Have chalo. Please solve it and send me the answer. I'll give you 5 minutes to solve it. हाँ भाई और वो साइन स्क्वायर एक्स है या साइन 2x? sin 2x है बच्चा. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मैं कभी LHS में हम d by dx नहीं लिखते हैं, इसमें हम हमेशा dy by dx लिखते हैं. और ये जो सेकेंड वाला है, इट इज x क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1. इट इज साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1. अरे ये x पावर 3/2 कहाँ से आ गया भाई? x पावर से -1 करते हैं ना. हाँ माइनस हाफ आएगा ना.
ये 1/√cos x कहाँ आ रहा है? 1/√cos x किसी का आंसर नहीं भाई। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, यस। नहीं बट cos 2x√x तो नहीं आएगा ना, cos 2x√x कैसे आएगा? sin 2x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2 cosine 2x ना, यू आर फॉरगेटिंग द 2 एंड यू आर फॉरगेटिंग द अदर टर्म एज वेल। तो इस प्रोडक्ट रूल में मिनिमम 2 टर्म्स तो आते ही आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। बस वो √x ऊपर है या नीचे है ये देख लो भैया। हाँ हाँ, गुड, यस। Okay, chalo. So now I'll tell you the answer. So for A wala part, y is equal to √x into sine of 2x, right? So we apply d by dx on both sides, and I notice that I am applying d by dx on a product of two functions. So left hand side simply becomes dy by dx, and on the right hand side I'm going to apply the product rule. So I will get d by dx of √x into sine 2x plus √x
into d by dx of sine 2x. So this will be equal to root x का मतलब होता है x raised to the power half और x raised to the power n का डिफरेंशिएशन होता है n x raised to the power n minus 1. So इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा half x raised to the power minus half sin 2x तो वैसे का वैसा रह जाएगा प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था इट इज 2 cosine 2x. So this will become 2 root x cosine 2x. Right, so let me write it properly here. 1 by 2 root x into sine 2x plus 2 root x into cosine 2x. This is the value of dy by dx. So this is the value of the slope. Right. So this is the answer to the first part. हाँ, root x नीचे आएगा ना x raised to power minus half is 1 over root x. ये एक्सपोनेंट्स वाला थोड़ा सा आप लोग को मैं बता दे रहा हूं बट आई थॉट दैट दिस इज हाँ बोलो Sir, how 2 like half x whole to the power minus half sine 2x plus 2 root x, how? हाँ Like how did we get 2 root x? what is the differentiation of sine 2x? Okay, Sine 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x. नहीं नो वो बुकलेट में देखना टेबल में sin 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 into cosine 2x. Yes. sin ax plus b में a बाहर भी आता है ना sin ax plus b का डिफरेंशिएशन इज a cosine ax plus b Yeah. Okay. है ना तो वहां से वो 2 आ रहा है. क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई? 007 बॉन्ड. एक मिनट रुको वेट अ मिनट. हाँ बोलो. आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट बट आई कैन नॉट. बोलो व्हाट एक्सप्लेनेशन डू यू वांट?
Second one. Second वाले में we have. So I'm not going to write d by. I'm not going to write d by dx all over again, right? So I'll just write the final dy by dx is equal to d by dx of three terms now. X cube sin x root x plus 1. Right, so what should I do now? क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट रूल तो केवल दो टर्म्स के लिए है, लेकिन यहाँ तो तीन टर्म्स आ गए मल्टीप्लायर में. What should I do? What is a logical or mathematical way to tackle this? The logical mathematical way to tackle this is to consider this as one function and this as another function, right? So if I do this, if I consider this as one function and the other as the second function, then I will get differentiation of, that is d by dx of x cube sin x into root x plus 1 plus x cube sin x into differentiation of root x plus 1, right? Okay. Now, to carry out this term, I'll have to use product rule again. And this time, these two will be the functions which are multiplied to each other, fx and gx. So, I will get, this is equal to d by dx of x cube into sin x plus x cube into d by dx of sin x whole into root x plus 1, right? So whole into root x plus 1. तीन टर्म कैसे ले सकते हैं? रूल तो देखो. Look at the rule. How can you take three terms? Right? Please be very, very careful. जो हमें रिलेशन दिया है, हम उसको बहुत ही closely follow करेंगे. Product rule tells me that if you find that there are two functions multiplying each other, there are two functions which are product of each other, as the name is product rule. There are two functions which are product of each other, and you are differentiating them, then you can use this formula. Only for two, not three. So, if I get three, then what I must do is I must break it up. जैसे यहाँ पे मैंने break किया, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए फंक्शन f हो गया, ये मेरे लिए फंक्शन f हो गया और ये g हो गया. और दूसरे वाले जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो फिर यहाँ पे भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो ये f हो गया, ये g हो गया. राइट, अभी भी एक टर्म मिसिंग है यहाँ पे. प्लस
x cube sine x into d by dx of root x plus 1. Right? And now I can carry out the differentiation. d by dx of x cube क्या होता है? 3x square sin x plus x cube cosine x whole multiplied by root x plus 1 plus x cube sin x into d by dx of root x plus 1. But इसमें जब मैं रूल 1 लगाऊंगा तो d by dx of root x plus d by dx of 1 आएगा. d by dx of 1 is 0 and d by dx of root x is 1 upon root x. Right? So this whole expression, I'm not going to simplify it further. This whole expression is the answer. Right? Okay. Now, before we move further, right, I really, no, it's not necessary to simplify it further. No. It is not necessary. Unless it is a glaring simplification. Unless you get something like x square minus 1 plus 1. अब उसको आप x square लिख दो, वो चलेगा, right? लेकिन अब ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको अब सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं. तो now I want to introduce some new notation. Right? I want to introduce some new symbols that we may be using. Right? So before I move ahead, so I told you that the slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, right, which we wrote as delta y by delta x, which we eventually wrote as dy by dx. Right? Okay. So I want to write some new notation. So if y is equal to f of x, please remember that I am using x because it is the most commonly used variable. It can be anything. Okay, so don't get confused. X can be anything. X, I am using x. It can be y, z, theta, alpha, beta, gamma, whatever you want. It can be that. A, B, C. Okay, so if y is equal to fx, then the slope of the graph will be given by dy by dx. यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है, right? यहाँ तक. So one guy comes along and he says, नहीं, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. ये जो dy by dx है, ये लिखने में बड़ा लंबा है. तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लिखूंगा ऐसे, right? So if the function is given by fx, then its slope is given by f dash. Okay, this is read as f dash x. Right? Some guy comes along and he says that, okay, I don't want to write it like this. I want to write it like f dash x. In fact, ये f dash x से पहले भी एक आया, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, but वो से बहुत लंबा है. So d by dx of fx, right? There's another way of writing the same thing. I've just written y instead of
I just written fx instead of y. So another, so like I said, a guy comes along and he says कि नहीं मेरे को तो और छोटा notation चाहिए, वो ये रहा. So this is f dash x. Another guy comes along and he says कि नहीं 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 ये dash बनाना भी बहुत लंबी कहानी है, ये सब मैं नहीं हो पाएगा. उसने क्या बोला कि जो slope रहेगा that will be this y dot. Okay. So these are all different notations which are telling the same story, right? Especially when you go to higher mathematics, you go to higher physics, you find that differentiation occurs more and more. So, especially when printing a book, it makes more sense to use the dot notation, right? लेकिन हमारे आपके लिए इतना ज़्यादा कैलकुलस नहीं आएगा, तो हम ये मैक्सिमम f डैश तक जाएंगे, okay? So f dash x यहाँ भी मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? d by dx of fx, right? I'm just, like I told you from day one, I'm just being lazy. I'm going to write dy by dx if y is equal to fx as f dash x, right? Okay, now with this new notation in mind, I want to show you what is another form of, or an extended form, maybe a better form of the product rule. So supposing that we are supposed to find d by dx of fx into gx into hx into ix dot 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 dot. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, right? Now, can you look at this expression, right? अभी हमने जो 3 का निकाला, can you look closely at this expression? ये जो मैंने red boundary में मैंने encompass किया हुआ है, final answer. Look carefully at the final answer and tell me कि यहाँ पे क्या आना चाहिए. How to carry out हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और बाकी सब वैसे ही चल देंगे, उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, उसके बाद बाकी सब वैसे छोड़ देंगे और ऐसे कंटिन्यू. good, बहुत good, yes. So this will be if you look at this guy, right? तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट एक्सपैंड नहीं किया, मैंने एक्चुअली जानबूझ के ब्रैकेट नहीं एक्सपैंड किया था, लेकिन अगर हम ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 3x square sin x into root x plus 1. लेकिन 3x square sin x into root x plus 1 is nothing but x cube का differentiation into sin x into root x plus 1. फिर सेकेंड टर्म आएगा x cube cosine x root x plus 1, which is nothing but x cube root x plus 1 as it is, and बीच में sin x को differentiate कर दिया. और तीसरा टर्म आ रहा है x cube sin x और थर्ड टर्म को differentiate कर दिया. Right? So this was the pattern that you should see. So the answer to this will be f dash. The answer to this will be f dash x into gx into hx dot 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 plus fx
into g dash x into hx dot 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 plus fx into gx into h dash x. Right, so this is the final form of the product rule. Yeah. Okay, next is number 4. It is called the quotient rule, and this is used when you get a function which is which is appearing as a fraction. There is a numerator, there is a denominator, and in this case the rule tells us that dy by dx is equal to d by dx of fx. That means differentiation of the numerator multiplied by the denominator minus, this time minus आएगा इस बार, numerator into the differentiation of the denominator whole divided by the denominator whole square. Right? So this is the for those of you who have already done this and moved ahead, what you can do is you can send me the proof of this. Can you prove this? Those of you who have already done this. WhatsApp पे कॉपी में you don't, rest of you we don't really need a proof, लेकिन जिन्होंने कर लिया है, जिनको ये सब पहले से आता है, उनके लिए an exercise. Okay, so we want to find dy by dx if y is equal to tan x. Now you already know the answer to this, right? Y is equal to tan x, then dy by dx will be equal to sec square x. So let me derive this by using the quotient rule that we have just written. So y will be equal to sin x divided by cosine x. Right? This is where we can apply the quotient rule. And so I don't want to write dy by dx anymore. बहुत ज़्यादा space ले लेता है. Y dash is equal to. So this will be d by dx of sin x multiplied by cosine x minus sin x d by dx of cosine x whole divided by cosine square x. What is d by dx of sin x? It's cosine x into cosine x, cosine square x. What is d by dx of cosine x? It is minus sin x. Minus sin x into minus sin x is equal to plus
sine square x upon cos square x. But this is equal to 1 upon cos square x, because sine square x plus cos square x is equal to 1. So this must be sec square x, right? So we have found the differentiation of tan x using quotient rule, and it absolutely corresponds to our previous answer which we had found using the definition of slope, right? Okay. So now I will give you two. I'll give you two examples. Y is equal to easy one, sin x upon x. Y is equal to x square cosine x upon 1 plus question. हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट. डिवाइडेड बाय समथिंग भी तो आएगा. आपने केवल न्यूमरेटर लिख दिया. cos x by x नहीं बच्चा, नहीं नहीं नहीं, cosine x by x नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? You have to apply this. You have to apply the quotient rule. Where is the quotient rule? Look, this is the quotient rule. It's huge. You have to take the numerator. You have to take the denominator, and then you have to differentiate the numerator, keeping the denominator the same. Then you have to subtract this from another product, which is numerator, which is kept just like this, multiplied by the denominator, which is now differentiated, divided by the denominator whole square, right? पूरा square है ना वहाँ पे. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Upon x square, yes, yes, yes. Absolutely right. हाँ, so I'll solve both questions. Don't worry. So नहीं बच्चा, cos x upon x square नहीं आएगा. देखो देखो देखो, a वाले में dy by dx will be equal to differentiation of the numerator
multiplied by denominator minus numerator multiplied by the differentiation of denominator whole divided by denominator square. So what is d by dx of sin x? Cosine x into x. I will write it like x cosine x minus, what is the differentiation of x? Well, differentiation of x is 1 because x power 1 है. x power 1 का differentiation. या ऐसे देखो ना, d by dx of x का मतलब क्या हुआ? Slope of the graph y is equal to x. y is equal to x का slope क्या होता है? 1. So this would be just sin x whole divided by x square. Right? So this is the this is the answer. Okay, now I want to solve the second one. So second one is d by dx of, मैं भूल गया, x square cosine x upon 1 plus tan x. X square cosine x 1 plus tan x will be equal to d by dx of x square cosine x into 1 plus tan x minus x square cosine x into d by dx of 1 plus tan x whole divided by 1 plus tan x का whole square. So the only catch in this question is this. क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें product rule लगाना पड़ेगा. So basically this question was a combination of the quotient rule and इतना लंबा आंसर है. Yeah. 1 plus tan x whole square. x square cosine x का क्या होएगा भाई डिफरेंशिएशन? अभी आपको थोड़ा सा इसमें आदत पड़ जाना चाहिए. इसका डिफरेंशिएशन होएगा 2x cosine x minus x square sin x. Right. So what I did was मैंने पहले x square को डिफरेंशिएट किया, cosine x को वैसे ही छोड़ दिया, और फिर उसके बाद से x square को वैसे ही छोड़ दिया, cosine x को डिफरेंशिएट कर दिया. Whole into 1 plus tan x minus x square cosine x into d by dx of 1 plus tan x. d by dx of 1 तो 0 होता है, और d by dx of tan x will be equal to sec square x whole divided by 1 plus tan x whole square. So this is the value which sign should be plus. कौन सा साइन प्लस होना चाहिए? गलत किया मैंने, कौन सा स्टेप गलत किया? नहीं, आई डोंट थिंक गलत किया मैंने.
नहीं बच्चा, प्लस नहीं होएगा, माइनस होएगा ना। हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते, सिंप्लीफाई तो आप सब कुछ कर सकते हो, पहले आंसर निकालना पड़ेगा ना। Once you have found the answer, then you can simplify. हाँ, सर 2x जो फर्स्ट है उसमें प्लस होगा ना, कहाँ पे Product. प्लस होएगा? 2x cos x माइनस x स्क्वायर sin x जो आपने लिखा है वो प्लस हाँ, कोसाइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x। नहीं, नहीं, कोसाइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ओके। हाँ, हाँ भाई बताओ। ₹51, सर रोल अगर नंबर 51। क्वेश्चन है कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है ये, तो हम लोग इसको इधर छोड़ सकते हैं ना, हम लोग को इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है फर्दर सिंप्लीफाई करने हाँ, की, राइट? सो नीचे भी जैसे 1 + tan x होल स्क्वायर है, हम लोग को उसको भी करना नहीं है ना, हम बस ऐसे ही छोड़ दें। कुछ, हाँ, कुछ जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अच्छा। Okay, now we want to study another rule. ए पावर एक्स वाला वर्कआउट करो ना, तभी तो मैं तो करूंगा ही, बट इवेंचुअली करूंगा ना मैं तो धीरे धीरे। यू आर, इफ यू आर अहेड ऑफ मी, देन ट्राई टू डू इट। ए पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यू नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल प्रूव हो गया, मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे। प्रोडक्ट रूल भी प्रूव कर दो। Okay, okay, great, good. Okay, so next what we want to study is called the chain rule, right? So there are two ways of approaching the chain rule, right? I'll tell you the first way and we'll discuss the second way tomorrow. So the chain rule, the statement of the chain rule is actually quite simple. What you can do is you can always consider this dy by dx as a fraction. In fact, it is a fraction. It is just y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? So this is the numerator and this is the denominator, and as a fraction dy by dx will obey all rules that are obeyed by fractions. And one of the most common rules of a fraction is that if you have the same factor in the numerator and the same factor in the denominator, then you can cancel them out, right? I hope everybody remembers this, right? ये सब तो मैं prerequisites में बताता ही नहीं हूँ, because I am assuming that if you are given a fraction like 4 by 10, then you will be able to write it as 2 by 2 divided by 2 into 5 and and you will be able to cancel out 2
and this will be equal to 2 by 5, right? ये सबको याद है ना ये? So just like this, the chain rule tells us that if you have dy by dx, then you can actually multiply and divide by the same number. It does not matter, right? तो मैंने क्या किया कि ये फ्रैक्शन dy by dx को न्यूमरेटर में एक नंबर dt से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी एक नंबर dt से मल्टीप्लाई किया. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम dt को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं. और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ये dx और dt का पोजीशन चेंज कर दूंगा. और अगर मैंने पोजीशन चेंज किया तो मेरे पास आ जाएगा dy by dt into dt by dx, right? And this is it. This is the chain rule, right? So the chain rule, formal statement of the chain rule is that dy by dx can also be written as dy by dt प्लस लिख दिया मैंने गलती से into dt by dx, right? So this is the formal statement of the chain rule. Right? So how does this help us? हमें क्या आराम मिल रहा है इसको? तो to know what we are getting out of it is, supposing that I were to give you a graph y is equal to sine of x square. अब हमने साइन x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, लेकिन साइन ऑफ x स्क्वायर का नहीं किया हुआ है कभी. यू कैन ऑलवेज लुक एट ऑल द व्हाइट बोर्ड्स बच्चा. आपके पास देखो स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा व्यू ऑल व्हाइट बोर्ड्स, राइट? सो यू कैन जस्ट व्यू एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन डाउन. इन एनी केस मैं सबका फोटोग्राफ लेके अभी ग्रुप पे डाल दूं, ठीक है? दिस इज द चेन रूल. dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. स्क्रीनशॉट लो ना, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट? चेंज कर रहा हूं मैं. So y is equal और ये हमारे टेबल में दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता. साइन x हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता है और x स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइन ऑफ x स्क्वायर हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. So what I'm going to do is that I'm going to say that let x square is equal to t. Okay. Then y is equal to sine of t. Right? Because x square I have assumed as something else. I have assumed that x square is equal to t. Now we want to find d by dx. Remember, we want to find dy by dx. So I apply d by dx on both sides.
and I run into trouble, right? I hope everybody here is realizing the trouble that I have run into, right? Because you will be running into this trouble very, very frequently. Trouble is that यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे तो t है, right? And this cannot be done. d by dx of sin x आप निकाल सकते हैं, d by dt of sin t आप निकाल सकते हैं, लेकिन d by dx of sin t आप नहीं निकाल सकते. This is not possible, right? So this variable and this variable must be the same for you to carry out the differentiation. So what are we going to do? Well, what we are going to do is we are going to apply the chain rule, and we are going to say that, look, I am going to multiply and divide by dt, which should make absolutely no difference. In fact, LHS में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, LHS तो dy by dx की है. तो अब LHS कोई फर्क नहीं पड़ा. RHS में क्या हो गया? RHS में क्या हो गया? What happened in RHS? Let's see. हाँ, yeah. So RHS में, since I'm going to apply the chain rule, and if you look at the chain rule statement, chain rule में हमने किया क्या है कि dt और dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर dx और dt को इंटरचेंज कर दिया. This is exactly what I want to do here, right? So I will exchange these two guys, dx and dt, and now I'll end up with d by dt of sin t into dt by dx, right? मैंने dx और d by dt of sin t becomes cosine t, and I have here dt by dx. So this is dy by dx. We can't leave the answer like this, right? Very, very easy. Now we know that t is equal to x square, और मेरे पास यहाँ पे dt by dx आया पड़ा है. तो मैं क्या करूंगा कि इसको दोनों साइड d by dx ऑपरेट करा दूंगा. तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला? मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला? dt by dx, और राइट हैंड साइड क्या मिला? 2x, right? On the left hand side, I am getting dt by dx, just like here I was getting dy by dx. Here I am getting dt by dx, and d by dx of x square I know is 2x, right? So let me write the answer once again. So dy by dx is equal to, let's go back, dy by dx is equal to cosine t dt by dx, right, is equal to cosine t dt by dx, and t is equal to x square. dt by dx is equal to 2x. Simply substitute back. dy by dx will be equal to cosine of x square
multiplied by 2x. This is it. Yes. This is the answer. Right? So look at the distinct steps. Let's go back and look at the distinct steps. So we have to find, हाँ ठीक है, x square आने दो ना, अपने को क्या दिक्कत है. So we have, एक मिनट, हाँ भाई बताओ. सर dt अपॉन dx 2x कैसे हो गया? t की क्या वैल्यू है? यस सर. t की क्या वैल्यू है? सर dt तो मल्टीप्लाई किया ना. t की क्या वैल्यू है? t. x स्क्वायर. dt by dx क्या होएगा? सर d of x स्क्वायर अपॉन dx. Which is अच्छा 2x. ठीक है सर. समझ है गया ना सर. समझ में? यस सर. So it is basically differentiation within differentiation. That's why it's called the chain rule. हाँ चलो फिर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. तो मेरे सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसमें कि मेरे को साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मालूम है, लेकिन इसमें फंक्शन विद इन ए फंक्शन, इफ यू वांट टू से इट लाइक दैट, I am getting function within a function. So to solve this, what I do is that I want to look at the function in a simplified way. सबसे simplified way में अगर मुझे function देखना है, तो function की complication इस वजह से हो रही है क्योंकि sin में x square आ गया. तो मैंने x square को t से replace कर दिया. अब मेरे को दिखाई दे रहा है y is equal to sin t. मैंने d by dx ऑपरेटर दोनों साइड अप्लाई किया. लेफ्ट हैंड साइड dy by dx बन गया जो मुझे निकालना है. राइट हैंड साइड d by dx ऑफ sin t आ गया जो मैं नहीं कर सकता. लेकिन मेरे पास अब एक नया टूल है which is the chain rule. So I multiply and divide this expression by dt. And I exchange in the denominator dt and dx. So now I end up with d by dt of sin t, which I can do into dt by dx. d by dt of sin t is cosine t. And since t is equal to x square, I can always find d by dt, I can always find dt by dx by carrying out differentiation once again. तो जब मैंने t is equal to x square पे d by dx ऑपरेट किया तो मेरे पास आया dt by dx is equal to 2x, राइट. और ये सारी चीजों को मैंने अपने जो एक्सप्रेशन आया था उसमें वापस से रख दिया. जब वापस से रखा तो t जो मेरा अज्यूम्ड वेरिएबल था वो गायब हो गया और मेरे पास dy by dx का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x, right? Okay, so this completes today's lecture. Homework is lecture 3 and you can exclude ln and e raised to the power wale questions, and lecture 4 which you have to read and do. Now you may or may not be able to do lecture 4 wale question. Does not matter. I will teach you tomorrow. The fact will always be there कि अगर आप lecture 4 पढ़ के question attempt करते हो तो कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो your understanding will be greater as compared to you coming with a blank mind. एक let me just
Let me just take a screenshot. उसके बाद से एक मिनट. हाँ, अब बताओ भाई, अब डाउट्स बताओ जल्दी जल्दी करो. सर अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें अगर हम लोग पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर साइन एक्स स्क्वायर को, तब भी तो यही आंसर आएगा ना? स्क्वायर को क्यों डिफरेंशिएट करोगे भाई? नहीं सर, वो चेन रूल का सेकंड एक रूल है ना लेक्चर 3 में, कि पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है उसमें, उसके बाद फिर साइन एक्स स्क्वायर को. पहले स्क्वायर को नहीं करते हैं बे, उसको ठीक से पढ़ो. उसको पहले हम लेफ्ट से आते हैं, लेफ्ट से देखते हैं फंक्शन कौन सा है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं. बट यस, यू आर राइट, यू कैन यूज द सेकंड वाला मेथड व्हिच आई फाइंड इजियर. लेकिन ये जो मैंने अभी बताया है ये फॉर्मल मेथड है. ये एक्चुअल जो मैथमेटिकली जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है वो ये. तो सर जल्दी करना है तो फिर सेकंड मेथड से करेंगे ना? बट अभी जिन लोगों ने सेकंड मेथड नहीं पढ़ा है या पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है वो फर्स्ट मेथड से करेंगे. अगर सेकंड मेथड पढ़ के समझ में आ गया तो सेकंड मेथड से करेंगे. ओके सर, थैंक यू. Any other people having doubts? Anybody else having doubt? Raise hand and I'll unmute. हाँ, सर वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x का मतलब होता है x raised to the power -1 और x raised to the power -1 का डिफरेंशिएशन will be found by nx n -1 which will be equal to -1 x raised to the power -2 and x raised to the power -2 का मतलब होता है 1 over x square. तो 1 by x का डिफरेंशिएशन होएगा -1 over x square. थैंक यू सर. ओके बच्चे, अगली क्लास में कोई मेरे को याद दिलाना, मैं क्लास के शुरू में ना कल थोड़ा एक्सपोनेंट्स रिवाइज करवा दूंगा. हाँ, एक बार होमवर्क वापस बताओ ना, क्या है लेक्चर 3 का क्या करना है? क्या हेलो, क्या? तेरा होमवर्क वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ बोल ना. सर होमवर्क Lecture क्या है, एक बार 3 रिपीट कर दीजिए. लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4. लेक्चर 3 में ऑल क्वेश्चन हो जाने चाहिए एक्सेप्टिंग लॉगरिथम और e रेज़ टू द पावर वाले क्वेश्चन दैट यू कैन चूज टू लीव. ठीक है. हाँ बताओ भाई, डाउट. सर मैं लॉग और वो ई रेस टू एक्स वाले कर सकता हूँ सर, मैंने पढ़ा है उसके बारे में. हाँ तो फिर करना, मना थोड़े ना कर रहा हूं मैं. ठीक है सर, ठीक है सर. Anybody else? ये 008 डाउट पूछना है. 36 सबको अनम्यूट कर दो. Everybody else wants to ask a doubt. Everybody is unmuted now. Everybody else to ask a doubt. सर Doubt. हम लोग अगर चेन रूल के बदले अगर हम लोग पहले साइन ऐसे साइन का वो डेरिवेटिव निकाले फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर. anybody else? और किसी का डाउट है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है. Everybody is unmuted. The derivative of 1 by sin x will be 1 by cos x. नहीं.
डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई साइन एक्स निकालने के लिए आप लिखोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। उसके बाद से आप चेन रूल लगाओगे, आप लिखोगे t इज इक्वल टू साइन एक्स, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर -1। फिर आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे दोनों साइड, तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t रेज़ टू द पावर -1। तो आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों तरफ दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt मल्टीप्लाई करोगे और dt और dx को एक्सचेंज करोगे। आ रहा है समझ में? सुनाई नहीं दे रहा आप। समझ में आया? सर करके दिखा दो। आए भैया। देखो भाई, देखो देखो y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स का हमें वो करना है ना, y सर कॉसेक एक्स लेके नहीं कर सकते। और -1 लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई dx will be equal to d by dx of raised to the power -1। अब इसमें आप क्या करो कि dt और dt मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा d बाई dt t रेज़ टू द पावर इनटू dt बाई dx। अब d बाई dt और t रेज़ पावर -1 अभी मैंने बताया था -1 ओवर t स्क्वायर है इनटू dt बाई dx, ये रहा ना dt, ये रहा ना d इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स। और अब t का वैल्यू वापस डाल दो इसमें, तो इसमें आएगा -1 ओवर t का वैल्यू है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इनटू कोसाइन एक्स। ये है डिफरेंशिएशन 1 ओवर साइन एक्स का, राइट। दिस इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ओवर साइन एक्स cot x, right, into cosec x। सर तो इसको सीधा हम लोग 1/sin x को cosec x लेके सीधा कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो चेन रूल लगा रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। आंसर तो वही आया ना। हाँ सर। हाँ भाई, और मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, 007, 051, 002। आपको अपने तरफ से अनम्यूट करना होगा। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन। चलो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, ask me on WhatsApp। I will see you tomorrow। Bye sir। Bye bye, bye bye। Bye sir। Thank you.